Hi, everybody. Welcome to Platonic and welcome to the first edition of Platonic Talks. Today, with me is Animesh Kumar Sinha, who is going to share with us his experience of UPSC Mains 2023. I will also introduce my guest to you. Animesh Kumar Sinha is currently working as an account officer in EPFO. He also cleared BPSC exam. So, those of you who want the strategy on both EPFO and BPSC, stay tuned to the channel. Additionally, he has written 5 mains with political science as an optional. Animesh is a dear friend of mine. We have written multiple mains together. Additionally, Animesh is one of the top scorers of political science, scoring as high as 286 marks in one attempt also. So with Animesh, I want to explore few things. जैसे कि he has given so many mains, he has also given multiple UPSC interviews. So how was this, let's say, mains different from the previous mains? Secondly, उनकी जो experiences है, learnings हैं, this will help all of us to gain new insights on how to tackle the exam. Okay. So first thing, of course, Animesh, you are a working professional. I am pretty sure it would have been very difficult to manage time and also give the exam. So experience Yeah. कैसा रहा आपका? First of all, thanks Amritang for the lovely intro. And as you said, मैंने service join की थी in November. Primarily December 2023. I got selected in August. So this was a new experience for me because as a working professional, it does get a bit difficult. आपकी preparation जो होती है. एक चीज ये कह सकते हैं कि because you've accumulated a lot of information and knowledge over the years, like I had been preparing for past 6 years, so that helped. मतलब I relied more on my past knowledge, both in prelims as well as in mains, because क्योंकि mains के time पे what happened was the result was declared on I think 12th June, and 19th June से मेरी training शुरू हो गई थी in EPFO. Right, right. And it was supposed to go on for 6 months. So, and then we had another exam in between, which I thought I should get. The APFC exam जो UPSC ने ही conduct कराया था on 2nd of August. So I had like quite a short amount of time to prepare for mains. So उसमें I had to adopt a different strategy compared to what I did earlier. So that was a new experience for me. And Okay. we know कि UPSC is not predictable. You can't predict UPSC questions either in prelims or mains. So having that in back at the back of my mind, I knew कि if I understand and learn the basics, if I remember the basics, then at least I can do justice to the papers of mains as well as in prelims also. So that अब was आप पॉल my साइंस first के आप strategy. स्टूडेंट हो तो आप जस्टिस की तो बात हाँ करोगे ही. वील आल्सो डिस्कस जी अबाउट पॉल साइंस yes कैसा sir. गया आपका. जस्ट वन थिंग बिफोर वी एटलीस्ट डेल्व इनटू हाँ अदर थिंग्स. पहली एक चीज आई थिंक मेनी ऑफ अस वांट टू नो, क्या आप सारे पेपर्स में जीएस के एटलीस्ट क्वेश्चंस पूरे कर पाए थे या व्हाट वाज देयर एनी बाउंसर? एंड देन आई विल आस्क यू अबाउट एसे. So this time, And especially the context of this question is you have written 5, let's say this is your 5th mains yeah, going on, है ना? yes, तो yes. आई थिंक पहले मेन से मुझे तो ऐसा लगा कि यार पहला मेंस और लास्ट मेंस तो अभी भी सबसे बड़ी दिक्कत आती है पेपर कंप्लीट करने हाँ, में. तो वाज दैट, exactly. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Uh, I think I did face problem, especially in the GS1 paper. GS1 paper में I could not attempt all the questions. Rest GS2 and 2, 3, 4 as well as in my optional, मेरा more or less एक आध question completely छूटा है. But ओके. Baki, I have written at least something what I could attempt in that question. But GS1 was a bit of problem, uh, primarily because I could not have that much writing practice that would राइट. I wanted because of short of I was short of time. तो एक वो होता है एंड देन रिसेंट मेंस में अगर आप पिछले 1-2 साल के मेंस के क्वेश्चंस देखेंगे तो इट इज मोर ऑन द एनालिटिकल साइड. अगर आप राइट. GS1 का सिलेबस देखें तो GS1 का सिलेबस इज अब हमको लगता है कि इट इज मोर स्टैटिक बिकॉज वी हैव हिस्ट्री, वी हैव ज्योग्राफी. द ओनली थिंग दैट कैन यू रिलेट टू करंट अफेयर्स या करंट इवेंट्स इज सोसाइटी. But even in geography and history questions, we are seeing more of an analytical questions या एनालिसिस करना है उसमें या और प्रीलिम्स की नॉलेज उतनी अब काम नहीं आ पाती है यहाँ पे बिकॉज इट्स नॉट फैक्ट्स ओरिएंटेड जो करेक्ट. क्वेश्चंस आ रहे. तो यू हैव टू थिंक ऑन एवरी क्वेश्चन क्या पॉइंट्स आ सकते हैं एंड दैट टेक्स टाइम. तो इफ यू डोंट हैव enough answer writing practice in that sense, so राइट. it becomes a little bit difficult.
So I बिल्कुल think सही. GS1 was the major road bump in completing my paper, so as to say. Any question that you can recall GS1 में जो थोड़ा मुश्किल लगा हो? Um, I remember few students talking about like fjords पे question आया था geography का. yeah, Coastlines and fjords question. fjords. Okay. It's like the question was how are fjords formed, Right. and then it talked about how, why they paint Aesthetic and such a beauty कुछ something. such a Right. picturesque Right. picturesque Right. atmosphere in the like. So the only Right. thing that I could remember in the question was that fjords are formed by retreating glaciers in the Right. Scandinavian countries like Norway or Sweden. Okay. That was Right. the only thing I could write because it's a straightforward landform question, which if you know, you know. Otherwise, Right. you can't invent how Right. fjords are formed. Right. Right. So बिल्कुल I सही. think in that sense, आप अगर कुछ भी उल्टा सीधा लिखने से better है कि you write what you know and then you leave that question because it Right, will right, right. not And paint a good especially this impression. is बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. And this is also, I think I got some doubts from the first जिन्होंने पहला मेंस लिखा है. So हाँ they were asking me, हम तो ये लिख ही नहीं पाए, तो I'm also telling you that even let's say हाँ somebody as नहीं experienced as Animesh also has problems in that. So yes ultimately you will be judged on the kind of questions you write because ultimately yeah वो relative exam है. definitely Right, right, right. So again, अभी GS में थोड़ा सा बात करने से पहले, I just also want to know because hmm everybody is always every year talking about UPSC's essay, and at least yeah from the last 2 or 3 years, है ना? yes So what was your impression of essays this year? बहुत हाँ मुश्किल लगे या थोड़े doable लगे? And ultimately, हाँ what essays you chose to write? तो compared to previous years this year's essay थोड़े doable थे. It was better Hmm. than the last 2 years, Right, I right, must say. क्योंकि in both the sections there was at least one essay you could think adequate points about and write. Like right. in the first section I wrote the fourth essay about Okay. innovation and creativity because Right, it's right, something right. that we inspiration for Inspiration, creativity, creativity, yeah, right. Magic from the so mundane, yeah, right. magic from the mundane. So I Correct. attempted that in the first section, and in the Hmm. second section, I attempted the first essay. Okay. The topic was girls are Between weighed girls down and by boys, right, restrictions and boys are right. weighed by demands. So in that also, the fourth essay, the Hmm. thing about education. Education is what Right, is left behind when we leave school. right, When we leave. So education, these are topics that you can answer. It's right, not right, that hardcore philosophy जो हमको पिछले 2-3 साल से मिल रहे थे. right, Like they right. just give a random quote and then you write about it. Absolutely correct. So Yeah. तो philosophy में इस बार के पहले के comparison में तो they were I think doable. yes. Yeah, they were Yeah. doable, and especially I think section 2 में भी हाँ one like you said society या education ये थोड़े से जो tint है. Of हाँ course आप भी engineer है मैं भी engineer हूँ, but we could not yeah. write mathematics is the music of reason. वो थोड़ा मुश्किल था. Yes. वो तो Right. बहुत ज्यादा abstract था but मतलब Uh, उसको like either उसको हटा के भी yes I think there was हाँ a उसके decent choice अलावा this time. there was a decent choice. And I think time management कैसा रहा उसमें भी I think हाँ ऐसे में essays how was में the normally experience? I give 1.5 hours to each essay. I Each essay, take right? each essay and I decide in the initial हमको जो 5 minutes पहले मिलते हैं Right, उसमें you can utilize कि decide करने में कि which essay you'll write. Some right, essays you know कि इस पे मैं नहीं लिख सकता and then उसमें for half an hour for brainstorming. I give half right, an hour each for brainstorming. So I select the essay, half an hour for brainstorming, whatever I can think of, and then I start writing from. Uh, uh, After half an hour, I start writing for 1 hour each, both essays. okay, उसमें okay. That is a very fair point, huh? Yeah. yeah, because Because you हम have लोग to do को बहुत बार justice to the लगता है, both yeah, essays. Yeah, yeah. you have to do Brainstorming is justice. also because हाँ if you spend 30 minutes, so that means you have yeah a very good collection of points. उस पे हाँ कट डाउन करने का फायदा नहीं है. It's better to then let's say invest time in yeah brainstorming. it's Yeah, right. उसमें brainstorming में आप you initially आपको जो points दिमाग में आ रहे हैं you write it down and then also try and arrange those points because आपको एक flow और structure भी बनाना पड़ता है इससे में to make right, it more easily readable. तो आप वो right. brainstorming के टाइम पे ही उसको कर सकते हो कि I'll write this in such a manner and then Hmm. you start writing the essay. Okay, great, great, great. तो ठीक है ऐसे में तो I do hope you get very good marks again this year. You have been good scoring well in essays also. One more point I also want to talk about to other people who are Yeah. watching this. Animesh is also very good with time management in GS. Okay. तो अभी GS में I think GS1 you had already spoken. आपने बताया कि Yeah. हाँ एक दो क्वेश्चन पे एक में I think that geography वाले में शायद दिक्कत हो. But I Hmm. think this year also society dominated and geography also dominated. Yeah. Geography
वो yes, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज, हाँ, रिकरिंग थीम्स को लिंक कर रहे थे, yes, yes. राइट? So, तो uh, एक, हाँ प्लीज प्लीज गो ऑन, या I was just saying GS1 has a lot of overlaps from GS2 and GS3. GS3 राइट से काफी overlap दिखता है क्योंकि इसमें environment, agriculture दोनों आ जाता है, and even disaster management. मतलब we have disasters in geography, disaster questions राइट, in geography. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, या तो वो एक फैक्टर आ जाता है, प्लस सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस ऑल्सो सिमिलर टॉपिक्स वो हमको देखने को मिल जाते हैं। तो GS1 राइट लगता है कि जब हम पढ़ते हैं या जब रिवाइज करते हैं तो इट्स लाइक कि GS1 के टॉपिक्स हम देख के चले जाएं, बट वी आर सीइंग हम्म कि जैसे GS1 में भी इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री हैज डिक्लाइंड अ फेयर बिट, राइट, बिल्कुल सही, राइट, या और दे आर आस्किंग मोर क्वेश्चंस फ्रॉम सोसाइटी. I हम्म personally find society a little bit more on the tougher side for me, हम्म, but क्योंकि उसमें यू लाइक ऑन द सरफेस लेवल आपको क्वेश्चंस देख के लगता है कि हाँ दिस इज एन इजी क्वेश्चन, बट व्हेन राइट यू स्टार्ट ऑफ थिंकिंग द पॉइंट्स तो यू कांट, मतलब तीन चार पॉइंट्स के बाद देन यू हैव टू मेक एन एफर्ट टू थिंक ओके राइट, और क्या एब्सोल्युटली, पॉइंट्स या इसमें डाल सकते हैं, अनलेस एंड until you are prepared beforehand major general points about any topic. So that is one point about society, that you should be prepared thoroughly. उसमें उतना सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है, but we see a fair bit of weightage for society in GS1. इस पर एब्सोल्युटली, होता और है. आई थिंक यस इट इज आल्सो मोर एनालिटिकल इन नेचर, आपको ऑन Yeah, द स्पॉट yeah, रीजनलिज्म, हाँ, कम्युनलिज्म, विमेन इश्यूज और बहुत ही yes. इंटीग्रेटेड सवाल पूछते हैं आपसे, राइट? And that's what takes time, because in history राइट, you know the facts, आप लिख सकते हो उसमें, culture बिल्कुल, और geography में भी it's a straightforward, uh, but society में you have to think more, so that takes करेक्ट time. करेक्ट. Now, moving on to GS2, you are a Hmm. student of political science. You have been a Yes. student of political science. So, how was GS2 this year? एक्सपीरियंस कैसा रहा, GS2 या फिर? GS2 हम्म का एक्सपीरियंस मेरा fairly अच्छा रहा, because हम्म, like you said PSIR does help a lot in GS2. राइट, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरनेशनल रिलेशंस के जो चार क्वेश्चंस होते हैं, हम्म, लाइक दिस टाइम वी हैड SCO क्वेश्चन एंड डायस्पोरा राइट, फॉर 10 मार्कर्स. हम्म These are हम्म, like sitters for us because we do study करेक्ट in depth. करेक्ट, जो डायस्पोरा है हमारा तो टॉपिक ही है इंडियन राइट, डायस्पोरा इन राइट, ऑप्शनल, and even the NATO question. हम्म, India International Maritime Organization I think would be a bouncer for everyone. उसमें हाँ, points थोड़ा सोचने ऑफ थे, बीट था, थोड़ा राइट राइट, बिल्कुल offbeat था, सही, थोड़ा राइट offbeat था, राइट but that would be difficult for everyone, राइट. because you normally do not read that much about IMO, आप UN And I और think people were actually focusing more on Quad and let's say G20, Indo-Pacific, Indo जो Pacific स्पेशली Quad, वाटर से रिलेटेड, हाँ, हाँ, पर उन्होंने उसको and ऑर्गेनाइजेशन पूछ G20. दिया. हाँ, जी Like ट्वेंटी, ऑफ कोर्स, major यस focus यस, for everyone would have been G20 because it has been going on for the entire year, करेक्ट but करेक्ट they करेक्ट asked करेक्ट about करेक्ट. IMO. आईमो, हाँ, वो भी 15 मार्क हाँ, का ऐसा बॉडी, वो हाँ, भी तो 15 थोड़ा, मार्क का क्वेश्चन, तो राइट वो राइट था. बट अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो, यू हम्म, कैन थिंक ऑफ अ लॉट मोर पॉइंट्स बिकॉज आप उसको ऑप्शनल के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो करेक्ट यू हैव अ करेक्ट लॉट मोर पॉइंट्स. करेक्ट, और सोशल जस्टिस के भी कुछ एस्पेक्ट्स आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो, एंड राइट गवर्नेंस इज वन पार्ट जो जिसमें थोड़ा बहुत आप अपने ऑप्शंस यूज कर सकते हो, बट बाकी जो एनजीओज हैं, एनजीओज में भी हमारी थोड़ी बहुत थ्योरी तो यूज हो ही जाती है एनजीओज एंड प्रेशर राइट ग्रुप्स राइट टू राइट, give it an additional touch. बाकी सोशल ऑडिट, सिटीजन चार्टर्स, ये सारे जो क्वेश्चन है ई गवर्नेंस, उसमें राइट, इट्स नॉट दैट बिग टॉपिक कि आप उसको अलग से प्रिपेयर कर सकते हो एंड इट विल बी फ्रूटफुल. और करेक्ट, GS2 में भी अभी पिछले 2-3 सालों से जैसे केस लॉस पे बहुत फोकस हो रहा है. They specifically ask in the questions कि with respect to explain this with respect to case laws, certain case राइट, laws. So I think that is an aspect that you have to start paying attention to. कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसमें केस लॉस, एंड GS2 में कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स भी जैसे होते हैं राइट, इन सोशल जस्टिस. इस बार जेंडर जस्टिस में भी उनने जेंडर जस्टिस का जो क्वेश्चन आया उसमें उन्होंने वैसे ही पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एज वेल एज केस लॉ से हाउ इज इट एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट, अफेक्टिंग. बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, उसमें अगर आपके पास दिमाग में आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं क्वेश्चंस, सो आई जैसे आई डिवाइडेड इन फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल DPSPs, फंडामेंटल ड्यूटीज, as well as in others like universal राइट adult franchise these are all constitutional provisions. उसके बाद राइट, आपके laws and case laws जो होता है
वैसे Right. लेके. So if you have these points on your fingertips, especially the articles, so that Hmm. helps in That GS3 also right. बिल्कुल better. सही है. बिल्कुल सही. और I think there was one question on Competition Commission of India. वो that could have been Yeah, slightly competition difficult. commission. हाँ. Yes, we don't normally study in statutory Right. organizations as such. Because I Statutory think में every हम, year, I think एक दो साल पहले उन्होंने लॉ कमीशन पूछा था, है ना? हाँ, या अटॉर्नी जनरल पे भी I think they were asked a attorney question. general. Yes, they हाँ. asked on attorney general, but Right. attorney general is something कि आप prelims में भी पढ़ते हो उसके बारे में. Right. It's a Right. constitutional body, तो मिलता है. Right. और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में नॉर्मली आप ये NHRC पढ़ते हैं, या जो नेशनल Right. कमीशन ऑन विमेन, नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज. Correct. You are morely focused on this, but this bar they Right. asked on Competition Commission of India. बिल्कुल So सही, बिल्कुल सही. Right. that was also one question from out of the ordinary. So this Slightly, bar yeah, slightly out of the ordinary. slightly Right. out of Right. the Right. ordinary. Yes. Okay, great, great, great. So I think GS2 में we have broadly discussed the outlines. Yeah. GS3 पे आते हैं. GS3 पे again I'll not dwell too much, but then overall, how did you feel? Because GS3 again has become that paper in the last 2 or 3 years, which is very low scoring. Okay, Yes. so Yes. of course sometimes the difficulty is higher, and also sometimes the marking is also difficult. Okay, Hmm. so we cannot control both the factors. But overall, how was your experience of this year? अगर compare भी करना चाहोगे overall और कैसा रहा? I think GS3 के पिछले 3 साल से from 2021 पेपर की डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर ही रही है, बिकॉज Right. उसमें कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं, Hmm. but they're asking sometimes very specific questions, especially in environment. Like Hmm. environment में कोई सा protocol होगा या कोई convention होगा, they'll specifically ask questions related to that. अब Right. उसमें you can answer in a generalistic manner only up to some point. अगर if you Right. don't know the specifics of the question that is being asked, you are not Right. फिर तो justifying the answer. जैसे इस बार correct, भी correct. नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम पे क्वेश्चन पूछा. हाँ, You right, right, study right. wetlands in general or wetland conservation rules ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो. If you हम्म. exact आप वो नहीं पढ़ोगे. Right. Similarly उनने स्पेस में तो पिछले 2 साल से, like last year they asked James Webb Telescope, this Right, year they right, asked Chandrayaan 3. So science right. and technology में भी इस बार they have been asking specific questions. More So you specific have to, questions, right? Hmm. but it can be said that it is more predictable because these were major space missions. Absolutely, So absolutely, yeah. they have a focus, so they are focusing on major space missions. So एक वो aspect Hmm. हमको ध्यान में रखना पड़ेगा. But I think in GS3, agriculture and security are two topics जिसमें हम उसको easily cover कर सकते हैं. मतलब they are topics where we can fetch more marks because Correct, they right. are slightly more predictable. Hmm. Even disaster management and I think technology and environment, science and technology Right. environment, इसमें हमको थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक पढ़ाई करनी पड़ेगी, लाइक स्पेसिफिक Hmm. टॉपिक्स पे. अगर वो हम कर सकते हैं तो देन इट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर Right. GS3. Okay, great. और how, like overall, were you able to attempt all of them या कुछ एक दो कोई skip हो पाया? कैसा रहा overall, if you remember? Like I did try and attempt almost all the questions. Almost all of them, right? हाँ. Almost all the questions. कुछ में I could not find more points, so I have written Hmm. a little bit about whatever I could figure Correct, out. correct, But correct. like I have not left a question completely blank. Right. But ठीक है, But that's उसमें है great, that's great. difficulties तो थी उसमें भी Correct, कुछ correct. questions. And coming to GS4, and again Yes. GS1 भी अभी आप the overall thing I want to know. Again, हाँ. I think इसमें भी time management का बहुत issue होता है. Time One is management already is fatigued, writing almost 3 papers of yes. GS and 1 essay. हाँ. So paper section A कैसा लगा? Was there any bouncer which you felt, or were you able to attempt नहीं. all the case studies? I think section A इस बार तो comparatively better था because last year तो questions were too long. You Right, already have less time and they're right. asking long-winded questions, तो उसमें it took more time last year. Correct. But Yeah. this year questions were short and crisp, easily understandable, और उसमें उतना Hmm. ज़्यादा I don't think कि किसी को bouncer मिलेगा उन questions. Right, right. और केस स्टडीज, आई थिंक केस स्टडीज तो हर साल मतलब वैसे ही आती हैं कि यू हैव आइदर 2 or 3 ऑप्शंस, नॉट मोर देन दैट. Hmm. प्रॉब्लम केस स्टडीज में आता है कि यू हैव 4 to 5 पेजेस. Right. उसको जस्टिफिकेशन, बिल्कुल योर सही. आंसर विल कंप्राइज ओनली ऑफ 2 or 3 ऑप्शंस, बट यू हैव टू एक्सटेंड कि उसमें अच्छे से सारी चीजें, स्टेक होल्डर, सारी चीजें, हाँ, कीवर्ड्स, स्टेक हर चीज, होल्डर्स, राइट. कीवर्ड्स यूज करें. तो केस स्टडीज भी टाइम, इसमें मेरा टाइम मैनेजमेंट पहले ठीक था,
आई थिंक लास्ट Okay. केस स्टडी का एक पार्ट मेरा उतना अच्छे से उतना पूरा कंप्लीट नहीं हुआ. आई हैव आंसर्ड like there were three parts to the question. I've answered two. I could not complete the third part. But This was because of lack of time. yeah, lack of time. Lack of time, हाँ. But still, I think you've done fairly well. अभी भी कुछ Yeah. बच्चों से बात हो रही है, तो even they were very well prepared. किसी के 2-3 क्वेश्चन सेक्शन ए में छूट गए हैं. So हाँ. that does happen every year. Okay, तो अभी यहाँ पे Yes, it भी happens. I think fairly well you have been able to maximize, right? Yeah, इसमें भी टाइम या इसमें टाइम मैनेजमेंट इसमें भी अपने को वही करना पड़ता है कि there are 13 questions in section A, so you have Right, to give at least 1.5 hours, right, and case studies 15 minutes per case study. right, उतना टारगेट लेके हम चलें तो I think it can be done. right. Okay. And before I move on to actually the optional, again एक और चीज, Yeah. did you use any diagrams, कुछ ऐसा value addition, something which stood out, which you felt was different from previous years? कुछ ऐसा कुछ करा हो papers में? Of I course, एक use तो यही है, diagrams in you almost wrote all the answers. That in itself is it's a great feat. yeah. But other than that, हाँ, I think I used diagrams most in geography, GS1 right, paper, right, because right. GS1 के जितने भी geography के questions थे, you have to have a diagram in that. Sure, So sure, I yeah, tried and gave diagrams, and apart right. from that, diagrams तो मैंने उतने use नहीं किए, but I did try and underline the main keywords जो हैं हमारे Correct, answers, because right. highlighting that is also important in the paper. Absolutely, absolutely, absolutely. So point-wise writing and highlighting those. I think that was Okay, sufficient. great, great, great. So now I will ask you now about our optional political science. Yes. तो अभी जैसे let's say before I ask you about the paper, what do you feel about those last 5 days? जब एक इंसान के पास 5 दिन होते हैं, हाँ जैसे पेपर खत्म करके आता है, आई थिंक पहले दिन तो लगता है 5 दिन है, बहुत बार 2 बार रिवाइज कर लेंगे. हाँ एंड आई थिंक डेफिनेटली. एंड में आते तक शायद एक बार भी ऐसा नहीं हो पाता है. नहीं, वो डेफिनेटली एक फीलिंग होती है. आई थिंक जब एथिक्स के पेपर के बाद जब हम आते हैं तो थोड़ा टाइम तो राइट, हमको डीकम्प्रेस करने में लगता है, द एग्जॉशन ऑफ दोस 3 days एंड द 5 पेपर. राइट, तो राइट, आई राइट. थिंक वो वाला दिन हम उसमें ले सकते हैं टू रिचार्ज आवरसेल्व्स, कि हम्म, रिचार्ज आवरसेल्व्स एंड फॉर्मुलेट अ स्ट्रेटेजी कि हाँ मेरे को क्या क्या पढ़ना है. थोड़ा बहुत हम्म. हम स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक यू कैन गिव टू करेक्ट, टू थ्री आवर्स की टू गेट अ हेड राइट, स्टार्ट. एंड राइट. 5 days में what I did was हम्म, take one day for each part. Like हम्म. first day Monday is part 1A, जितना राइट, भी मैं कंप्लीट कर सकता हूँ. सिमिलरली राइट, राइट, 4 days में, और वो 5th day was the reserve day कि जितना भी मेरा बचा है राइट, जिस भी सेक्शन में I try and राइट, finish those parts. और राइट, थोड़ा राइट. हमको लेकिन इसमें ये भी ध्यान देना पड़ता है कि हिंदी का जो पेपर है our language paper, हाँ, that लैंग्वेज does दैट not इज नॉट suffer. गेट कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल. थोड़ा बहुत राइट, उसमें भी हमको पढ़ना ही पड़ेगा. वरना उसमें भी जस्टिस नहीं हो पाएगी. हाँ करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. डेफिनेटली. ओके, तो तो अभी आई थिंक आई विल स्टार्ट विद GS, सॉरी, द ऑप्शनल वन. मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ बिकॉज वी कैन ओके. डिस्कस इट. पीपीटी और थोड़ा सा एक है, आई हैव समथिंग. तो हम्म. अनिमेश, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन आल्सो? अभी तो ब्लैंक है स्क्रीन. या नाउ आई कैन अच्छा, सी. you can see the screen. Okay, excellent. Okay, या ठीक है. So again, I think we'll start with paper one first, and then we will go to paper two. Okay. या. Paper two पे I don't have all the slides, but again हम normally discuss कर लेंगे. हम्म. Okay. तो paper one में I at least मुझे एक दो चीजें इस बार थोड़ी सी different लगी. So again we'll start हाँ. with the very first part. Okay. या. Which is the question which we have to attempt. Okay. हम्म. तो यहाँ पे how was, अब ये तो सबको ही करना पड़ेगा. तो how was your experience of हम्म. this? कोई ऐसा बाउंसर लगा right from नहीं, all these like आई थिंक दीज आर क्वेश्चंस जो अगर कोई भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट ने पढ़ा है right, एक साल तक आराम से, so he'll be able to attempt all these questions. This is not right, something new. Like and I generally think 10 right, 10 right, markers में ही they ask bouncers, because right, हाँ, इस बार ऐसा नहीं लास्ट ईयर किया. भी हुआ था. हाँ, लास्ट ईयर ऐसा हाँ, हुआ था, हाँ, लाइक परमानेंस ऑफ रेवोल्यूशन, कोई right, जिसके बारे हाँ, में आप ज्यादा नहीं पढ़ते हो, दे आस्क इन 10 correct, मार्कर क्वेश्चन. बट ये correct, 5 correct, क्वेश्चंस correct, ऐसे थे कि यू विल हैव समथिंग और द अदर टू राइट ऑन दिस. दीस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. सो दिस इज लाइक अ right, हाई स्कोरिंग क्वेश्चन फॉर absolutely, absolutely, and I think उन्होंने ये सोचा होगा कि अभी हाँ. बाउंसर्स यहाँ नहीं रख रहे हैं, पर एटलीस्ट 20 मार्कर्स में बाउंसर रखेंगे हाँ यस आगे जाते 20 हुए. मार्कर्स है. And again, I think the people who are also preparing and watching the video, I think ये जो topics है ना, अपने normative approach हाँ. या decline of political theory, यस. every year वो हर बार हाँ इतनी हाँ. बार आपसे पूछ चुके हैं. दिस इज अ रेकरिंग तो थीम, तो बहुत ये ज्यादा तो आप रेकरिंग मिस रेकरिंग कर ही नहीं सकते.
एक और चीज है, आई थिंक इस बार, एंड आई थिंक फ्रॉम फ्यू टाइम्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज नॉट डोमिनेटिंग एज मच. इस यस. बार भी आई कैन ओनली सी हाँ. वन क्वेश्चन ऑन हॉब्स एंड वन क्वेश्चन ऑन मिल, ऑन ऑल्दो मिल मिल्स. को आप फेमिनिज्म या बाकी तरह से भी थोड़ा सा बोरो हाँ. करके भी आप लिख सकते हैं. बट मिल में भी जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा, इट वाज मोर ऑन हम्म. फेमिनिज्म. हाँ लाइक द हाँ, राइट टॉपिक राइट वाज राइट, ऑन बिल्कुल. सब्जेक्शन ऑफ वुमेन. उसमें राइट हम राइट, जब हाँ. मेल्स पढ़ते हैं तो इतना हमारे पास कंटेंट नहीं है टू व्हाट मिल टू हैज एब्सोल्युटली सेड. राइट, बिल्कुल टू बिल्कुल व्हाट मिल, बिल्कुल, वो यू विल हम हैव एक तरह टू से ऐड पासिंग ऑन. रेफरेंस में हाँ. ही पढ़ते हैं. हाँ, हाँ वही, हाँ. यू हैव टू ऐड ऑन क्वेश्चन थीम्स फ्रॉम अदर फेमिनिस्ट स्कॉलर्स, अगर हमको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, बिकॉज वी डोंट एब्सोल्युटली हैव मच एब्सोल्युटली. कंटेंट इन दैट. राइट. तो एक तो है कि आई आई डोंट थिंक इसमें कोई ऐसा इशू आया होगा. दिस हाँ. वुड हैव बीन फेयरली नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड. दिस वाज वेरी देन स्ट्रेट. सेकंड क्वेश्चन व्हिच आई हैव इज पेपर 1A और 1B में किसमें से कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे आपने? मैंने पेपर 1A के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे. दिस बीइंग ओके, इज इट क्वेश्चन सेकंड एक ये बीइंग है? थर्ड. यस. हाँ. चलो सेकंड को सेकंड वाला मार्क कर दे. क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट 3 किया करा था? था. यस, 3 भी मैंने करा था. अच्छा, 2 और 3 करा था. चलो हम 4 2 ऊपर और से 3 देख है. लेंगे, ठीक है. हाँ. अच्छा, अब यहाँ पे आई थिंक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन 2A, दिस इज वेयर आई या. फेल्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है इस बार. हम्म. They are asking the success of contemporary democracies. Usually, यस. this kind of a question is reserved for paper 2A. 2A. या. अब यहाँ पे because now they have asked कि success of contemporary democracy, हाँ. this opens a Pandora's box. अब बच्चे या. को, मतलब स्टूडेंट को rights, democracy, मतलब हर एक चीज हाँ. contemporary यस. perspective में देखनी पड़ेगी. They may or they may not ask, हाँ. but of नहीं, course अब यहाँ पे एक्चुअली पूछ लिया. हाँ. अब हम लास्ट ईयर का भी पेपर अगर देखें तो उसमें लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में इफेक्ट पूछा था. राइट 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 राइट. Contemporary world. So they are trying to bring in contemporary events या contemporary analysis in static topics of paper one. करेक्ट तो I करेक्ट. think that is कि हमको पेपर वन और टू भी इंटीग्रेटेड वे में पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली द स्टैटिक पार्ट. राइट राइट. और अभी इस वाले में एटलीस्ट दोज ऑफ यू हाँ. हु आर रीडिंग अबाउट इट, यहाँ पे आई थिंक बिकॉज इन द लास्ट 2 or 3 years, especially because of COVID, and I think या. reports on the decline of democracies, be it यस. Myanmar and be it हाँ. other places in India, including Capitol जो अटैक हुआ था ट्रम्प यूएस हम्म. वाले टाइम पे, उसमें भी बहुत ऐसे आए थे. एंड देन आई थिंक नोशंस ऑफ एक क्या बोलते हैं सर्वेलेंस स्टेट, उसमें भी एक तरह से फूको या बाकी लोग को उन्होंने या. रेफर करा हुआ था, राइट. तो दिस यस. ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. 20 मार्कर है और बहुत ज्यादा स्कोप है हाँ. लिखने का, है ना. देर आर सो यस. मेनी डायमेंशंस टू एक्सप्लोर हियर. या. सेकंड तो रॉल्स है, रॉल्स के बिना तो पेपर अधूरा है. एक और यहाँ क्वेश्चन पे तो भी आई आना थिंक ही है. कम्युनिटेरियन क्रिटिक बहुत पूछ रहे यस. हैं यहाँ. डायरेक्टली हाँ. मेंशन्ड भी है. आई थिंक दे आर आस्किंग दिस अ लॉट. they 2021 में भी they asked I think a 10 marker or 15 marker on एंड आई communitarian थिंक critique only. लास्ट ईयर दे हैड आस्क्ड अबाउट एंटाइटलमेंट थ्योरी, वो नॉजिक और वैसे हाइक हाँ, वाला नोजिक्स उस पर्सपेक्टिव एंटाइटलमेंट पे चले थ्योरी. गए थे. तो राइट हम राइट. ये भी देख रहे हैं कि जस्ट फ्रेंच टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. आई हम्म. मीन फ्रेंच टॉपिक्स की हम लोग उतना ज्यादा नहीं पढ़ते हैं उनको, या दीज आर द लेटर थ्योरीज या क्रिटिक्स जो हैं करेक्ट हमारे करेक्ट सिलेबस में. तो उनसे करेक्ट भी अब क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं करेक्ट. गिवन एंड हाउ पेपर डिड वन. यू, राइट, एंड हाउ डिड यू फील अबाउट दिस वन, क्रीडो ऑफ रेलेवेंस? I think credo of relevance is again behavioralism as an important behavioralism, post behavioralism, recurring theme राइट है political theory का. तो creed of राइट relevance was also I think a straightforward question. इसमें राइट. you'll have to borrow जो हमने decline of political theory जो paper पिछले वाला है, like हाँ हाँ हाँ. first question में राइट हमने जो राइट. देखा, उससे भी आप इसमें भी उसको थोड़ा यूज करोगे ही, बिकॉज अगर आप पोस्ट बिहेवियरलिज्म बता रहे हो तो you'll have to थोड़ा बहुत relevant background तो दोगे ही about राइट डेविड. राइट राइट. एब्सोल्युटली. That's हाँ, तो why. इसमें वापस हाँ, ये भी एक बस But हो सकता है, मे बी समबडी इज नॉट एबल टू रिकॉल ऑल द पॉइंट्स ऑफ डेविड ईस्टन, या. मे बी यस, दैट कैन जो बी अ 7 चैलेंज. पॉइंट्स, हाँ हाँ, ये वो हाँ. 7 पॉइंट्स जो इसके क्रीड ऑफ रेलेवेंस स्पीच के थे, आई थिंक अगर राइट. इसमें आपने वो सारे पॉइंट्स लिख दिए, 7, ऑल 7 पॉइंट्स, हाँ, देन दैट कैन मेक अ बिग डिफरेंस. मेक अप फॉर इट. या करेक्ट या. करेक्ट 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 करेक्ट, बिल्कुल सही है. ओके फाइन. इस पे हाउ डिड यू स्ट्रक्चर, आई थिंक आउट ऑफ द थ्री, इफ आई वांट टू आस्क यू अबाउट द डेमोक्रेसी पार्ट, लेट्स से या. हाउ, बोले ब्रॉड पॉइंट्स पूरा एग्जैक्टली, अगर आप इफ यू नॉट एबल टू लेट्स से टेल, बट स्टिल. आई थिंक इसमें मेरा जो अंडरस्टैंडिंग था ऑफ स्टेट हम्म. लिमिटिंग इट्स पावर, it was हम्म. I took it as a question of democracy and human rights, the relevance of ओके human rights, because ओके. uh, ऐसा हमने पहले भी क्वेश्चंस देख रखे हैं
in our Right. crash course also. तो उसमें हमारा ये था कि इसमें I took it from the human rights perspective and Okay. जो थीम था responsibility to protect, जो sovereignty है, sovereignty is not Right. just power, क्योंकि इसमें that is also state का limitation है power पे, Right. its power. Correct. Correct. तो Correct. Correct. that aspect I took. इसमें हम Okay. एक और एस्पेक्ट देख सकते हैं सीवी मैकफर्सन का, बिकॉज सीवी मैकफर्सन का जो डेमोक्रेटिक थ्योरी है इट टॉक्स अबाउट क्रिएटिव फ्रीडम एंड Right. उसमें एक्सट्रैक्टिव पावर एंड And डेवलपिंग पावर developmental. की बात Yeah. करते हैं, डेवलपमेंटल पावर. तो दैट एक्सट्रैक्टिव पावर ऑफ द स्टेट, उसको हम Right. एग्जांपल ले सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम Okay. दैट, Okay. Okay. एज यू सेड, जो करंट कंटेम्प्रेरी जो डिस्कशंस चल रही है, हम उसके बारे में भी इसमें ऐड कर सकते उस पे भी हम हाँ बता सकते हैं. हैं, करेक्ट. बात कर करेक्ट. सकते करेक्ट. फेयर. फेयर. हैं. ठीक है. आई थिंक वी आर अंडरस्टूड दिस. थर्ड वाला भी शायद आपने अटेम्प्ट करा था. यस. ओके. हाउ लेट्स से फैशिज्म आल्सो आई रिकॉल 2018 या 19 में भी पूछा है उन्होंने. एक दो बार और पूछ चुके हैं या फेयरली रिसेंटली, राइट? या And fascism shows an ambivalence towards या parliamentary democracy. How did you या find this question overall? this is a tricky question because this is not something that you normally study in fascism. मतलब जो हमारी fascism वाली theory है, हाँ. उसमें Right. it's not that relevant कि ये how is it ambivalent. हम जो पढ़ते हैं कि it is anti democracy, anti हाँ. हाँ. rationalism. So Right. it is again, Yeah. like what we think is it is fascism was always against parliamentary democracy or democracy so as. अब इसमें ambivalence जो term use कर दिया, so Right. you'll have to justify some aspect ki how did they favor parliamentary Favorite, democracy. right? हाँ. Correct. Because Correct. you know इसमें मुसोलिनी का जो statement है that parliament is just a talking shop and leader is Superman. So parliament is a talking shop means that they are against it. But हाँ, they're not you'll against have this idea. Yeah. Correct. yeah. So you'll also have to show ki how did they favor it. इसमें what I wrote was कि most of these leaders, the demagogic leaders, required parliamentary democracy initially to establish power. Correct. Like Hitler, Mussolini, both became the leaders they were because of parliamentary democracy. So initially they used parliamentary democracy or favored parliamentary democracy, and then when they established their power, then they turned against it. Right. That is Right. how I और उस structured the question. fair point, fair point. And again, we can also link here हाँ. the workings of, let's say, Hannah Arendt on the origins of Yeah. totalitarianism. वो भी किस तरह से बताती है how this starting with democracy subvert हो जाती है पूरी तरह से authoritarian Yes. या totalitarian regimes में, Yes. right? Yes. हाँ, इसमें वो Fine. रिवोल्ट ऑफ द मासेस जो एलेक्स डी टॉकवेल का डेमोक्रेसी Right, right. टर्निंग इनटू मोबोक्रेसी, ये एस्पेक्ट Right. भी हम लगा सकते हैं. एंड एज यू सेड हैना अरेंट का जो सुपरफ्लुअस एंटिटीज वाला पोर्शन होता है, Right. वो आप Fair point. एग्जांपल ठीक डाल है. सकते हो इसमें. Right. तो दैट इज राइट. दूसरा फिर हम ये तो काफी पढ़ते हैं आई थिंक हाँ. अफर्मेटिव एक्शन या में, आई थिंक है ना, कि क्रिटिसिज्म. एंड आई थिंक दिस ईयर हाँ बोथ दीज दिस एस्पेक्ट्स वी हैव रेड अबाउट. या तो आई थिंक दिस इज हाँ. अ फेयरली इजी क्वेश्चन और अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, क्योंकि आप राइट. अफर्मेटिव एक्शन के बोथ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स आप जानते हो बिल्कुल. विद बिल्कुल. स्कॉलर्स किसने क्या कहा है, राइट. तो राइट. उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो इसमें. राइट. या नेक्स्ट वी कम टू यूरोसेंट्रिज्म. अब ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है बिकॉज इसमें पोस्ट यस. कोलोनियल हाँ. पॉलिटिकल थ्योरी की बात करी गई है. यस. एंड ऑफ कोर्स इट इज लेट्स से रिएक्शन अगेंस्ट दिस पार्ट. तो टारगेट और मोटिव फोर्स, हाउ डिड यू फाइंड दिस क्वेश्चन? I think this is again a question from what we can say fringe topic because post-colonial theory इतनी नहीं पूछी गई है previous years के questions में भी. Right. Right. So you can have a tendency कि इतना नहीं पूछा जा रहा है तो at least आखिरी के revisions में you may skip it और ऊपर से देख लेंगे आपको. क्योंकि इसमें हम post-colonial ज्यादा पेपर 2 में भी पढ़ते हैं. हाँ, बिल्कुल. करेक्ट. पेपर 1 से ज्यादा हम पेपर 2 में फोकस कर देते हैं. राइट. बट आई थिंक इस क्वेश्चन में भी थोड़ा तो सोचना ही पड़ेगा आपको हाउ इट इज बोथ अ टारगेट एज वेल एज द मोटिव फोर्स. यू हैव टू, देयर आर टू पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन. तो उसमें हमारे पास जितना मैटर है इसमें जो स्कॉलर्स हैं, यू हैव टू हैव एडवर्ड सेड एंड फ्रांस फैनन, गायत्री स्पिवाक, ये जो स्कॉलर्स हैं इनका यूज करके ही हमको आंसर करना पड़ेगा. एंड यू कैन आल्सो ऐड योर नॉलेज फ्रॉम पेपर 2A.
because international theory is also a part of politics, and उसमें हम ज़्यादा बोलते हैं कि Eurocentrism, because all Right. the mainstream theories are Eurocentric. So Right. that aspect also we can use in this answer. This question. करेक्ट बिल्कुल सही है बिल्कुल सही आई अग्री विद यू तो ये कर सकते हैं तो आई थिंक दीज टू वर योर मेजर क्वेश्चंस व्हिच यू अटेम्प्टेड Yeah. इन पेपर 1A ओके यहाँ पे भी आई जस्ट क्विकली पास थ्रू दिस अब जैसे यहाँ पे भी है Yeah. विद इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट हाँ, लोग बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट को आई डोंट थिंक दे रीड नहीं इन पढ़ते दिस हैं मच ज़्यादा. डिटेल और Yes. उसमें भी पूछा है धम्मा facilitating the emancipation of political action Emancipation of political action. it is let's say slightly tricky because again अब कोई let's say you can refer दीघ निकाय या फिर अलग से जो सूत्रास हैं या जो but हाँ. then this also becomes more tricky क्योंकि 20 मार्कर में इतना अच्छा कंटेंट Yes. हो that might be difficult okay Might be difficult. Yes. एंड सिमिलरली आईपीटी अब इन्होंने दोनों इस पर रखे आईपीटी और बिंदु भी एक ही आईपीटी में हाँ. रखा है और बुद्धिस्ट दोनों एक साथ और रखे हैं इफ and somebody is Buddhist पे not very much हाँ अब बुद्धिस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस है Buddhist पे बिल्कुल ज्यादा फोकस हो रहा है क्योंकि पिछले 2-3 सालों में बुद्धिस्ट से ही क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं. Like राइट हाँ Kautilya हाँ and other scholars are not being asked that much जितना बुद्धिस्ट पूछा जा रहा है. ये भी And सही बात है ये भी सही है yes. अब एक और चीज थी जैसे उन्होंने ऑल्दो जेएस में लिखा मुझे भी इस बार Hmm. ही लगा एंड अगेन दिस इज आल्सो वन ऑफ द स्ट्रेटजीज व्हिच आई थिंक शुड नॉट बी डन एज मच पीपल इन द लास्ट रिविजन एंड आल्सो द लास्ट थिंग दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन डब्ल्यूपीटी अभी भी अगर आप देखोगे डब्ल्यूपीटी पर अगर बहुत ज्यादा टाइम लगाया है इट माइट नॉट बी एज फ्रूटफुल ठीक है पर Yes. बाकी सारे पोर्शंस भी करने उतने ही जरूरी हैं एंड समटाइम्स दे आर उतने ही आस्किंग यू जरूरी है. मोर यहाँ पे अगर आपने हॉब्स बहुत ज्यादा रिवाइज नहीं भी किया है दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑलमोस्ट इनग्रेन्ड इन द पीपल हाँ. और दूसरा Yes. भी सवाल है जो लीगल सबऑर्डिनेशन ऑफ वन सेक्स है इसमें भी यू आर गोइंग टू बोरो अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम फेमिनिज्म एंड अ From लॉट ऑफ feminism. फेमिनिस्ट थिंकर्स क्योंकि प्योरली मिल के परस्पेक्टिव में 15 मार्कर लिखना थोड़ा सा मुश्किल 15 है mark. हाँ, मुश्किल है. राइट तो अगेन यही है कि unnecessarily too much time on WPT although yes WT is important for your foundation Yeah. but again when you're writing mains और लास्ट की जो 2-3 महीने हैं उस पे थोड़ा सा Hmm. बाकी टॉपिक्स को भी प्रायोरिटाइज करना थोड़ा जरूरी हो जाता है Yes, I think उसमें हम ये कर सकते हैं कि it is important to have very short and crisp notes of WPT, especially the scholars. Like 2 to 3 करेक्ट pages for each scholar, जो आप 2-3 घंटे में रिवाइज कर सकते हो easily. वेरी मच That इंपॉर्टेंट saves राइट a या lot of time क्योंकि हम start हमारी टेंडेंसी है कि we start from Western political thought only. करेक्ट हमको हमने करेक्ट पढ़ा भी करेक्ट वैसे ही है and then it वैसे takes ही a है lot हाँ of time. वो आधा दिन उसी में निकल जाएगा आपका अगर आप पूरा उसी पे फोकस करोगे and then एब्सोल्युटली you करेक्ट या tend to hasten up. And I करेक्ट think the third question be Swaraj has been asked. It's a राइट recurring question in Aurobindo Ghosh's thought थ्योरी या करेक्ट करेक्ट theory करेक्ट Swaraj. But इसमें भी they एब्सोल्युटली have करेक्ट added the Indian social, political and cultural history. तीनों aspects में आपको कैसे how it affected. So that is also something that इसमें आपको थोड़ा सोचना तो पड़ेगा. स्लाइटली more into करेक्ट 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 Yeah, करेक्ट slightly more ओके in-depth question. कमिंग टू आई थिंक ये तो करना ही पड़ा है ना Yes. तो इसमें देव आस्क्ड यू आई थिंक इसमें भी मोर और लेस दिस कुड हैव बीन डन राइट कोई ऐसा चीज लगी जो मुश्किल लगी हो बहुत ज्यादा एक ऐसा नहीं, I think these are all quite straightforward questions क्योंकि environmentalism of the poor हम हाँ इसमें भी पढ़ते हैं, हम पेपर 2 हम में इसमें भी भी पढ़ते हैं आई आई आल्सो हैव द बुक हियर ऑफ रामचंद्र गुहा या इन्वायरमेंटलिज्म इसमें भी इट इज प्रॉपर्ली मेंशन्ड हियर यस सोशल मूवमेंट्स हाँ में जनरली एनवायरनमेंट के ही क्वेश्चंस हमको देखने को मिल रहे हैं. राइट एंड करेक्ट करेक्ट इम्प्रिंट ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक ये हम GS2 में भी इसकी चीज पढ़ते हैं और हमारे राइट उसमें भी एक एस्पेक्ट है ही. एक करेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में हो सकता है कि आपको लिखने के लिए उतने ज्यादा पॉइंट्स ना मिले बिकॉज इट इज समथिंग कि हम उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ते हों मे बी. बट आई थिंक इफ यू रिमेम्बर द बेसिक स्ट्रक्चर और उसके आर्टिकल्स जो हैं अभी इसमें आप राइट यही मेंशन कर दो एटलीस्ट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में DPC की बात की है रादर देन 73rd. एंड उसका करेक्ट थोड़ा बहुत डिटेल्स जो बेसिक फंक्शंस हैं वो तो हम जो नॉर्मल अपनी अंडरस्टैंडिंग है उससे भी लिख सकते हैं कि क्या फंक्शन होगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का. So I राइट think that and even सत्याग्रह and Indian nationalism I think ये हम हमारे लिए तो पढ़ना जरूरी है ही both from राइट GS aspect as well as from Gandhian political thought. राइट And National राइट राइट Commission for Minorities also is one statutory organization जो हम पढ़ते ही हैं.
जो हम पढ़ते हैं, मतलब including its case studies, achievements, all these हाँ, things we also including read its about. case हाँ, studies we read about, so I think it can be answered fairly well. correct, correct, correct. तो अभी इसमें what was that one question which you attempted? Was it this one या कोई और था? No, I attempted the eighth question. 8th वाला, चलो ठीक है. I will not, हाँ, let's say अभी बाकियों में हम इतना नहीं करेंगे. That I'll have a separate yeah, discussion video जिसमें मैं explain करूंगा. हाँ, ओके. सो अगेन डॉक्टर अंबेडकर पे एक सवाल है, एफडी पे सवाल है, हम्म, फेडरलिज्म, अगेन दीज आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स. नीति yeah, आयोग भी फिर से रिपीट हुआ है. दिस इज हम्म, ऑलरेडी कम. ग्रैंडविल ऑस्टिन वी आल्सो रीड अबाउट. अच्छा ठीक है. अच्छा मुझे ये बताओ, व्हाई हम्म, डिड यू अटेम्प्ट, आई थिंक दिस इज द वन यू अटेम्प्टेड, राइट? yeah. ओके, सो व्हाई दिस एंड व्हाई नॉट द अदर टू? लेट्स से व्हाई वर यू मोर कॉन्फिडेंट हियर? लेट्स से I think लोग को थोड़ा चॉइस का भी आइडिया लगेगा कि लेट्स से यू इस चोज टू अटेम्प्ट दिस. हाँ. in this question I think कि तीनों questions ऐसे थे जिसमें I could justify my answer. Like there is always I राइट. think one question जो बाकी दो में था कि I thought कि इसमें मैं उतना ज्यादा पॉइंट्स में जनरेट नहीं कर पाऊंगा, उतने ज्यादा हम्म. अच्छे से नहीं उसको फ्रेम कर पाऊंगा. बट दिस करेक्ट. इसमें यू आई थॉट कि आई कैन जस्टिफाई ईच क्वेश्चन. आई हम्म. थिंक सेकंड क्वेश्चन में इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हो सकता है, हम्म. बट बाकी दो क्वेश्चंस आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. पर वन इज अगेन टॉकिंग सेकंड अबाउट. में एक और चीज है ना, वो 15 मार्क. अगर 20 होता तो थोड़ी और दिक्कत होती. हाँ, 15 में थोड़ी और दिक्कत जितने होती. भी आइडिया है, नॉलेज है, आई थिंक उतने में या ट्रेंड्स आप वो सब विद स्टडीज आप बता या सकते हो. लाइक आई हाँ. रोट आई 3 या. पेज मेरे पूरे इसमें कंप्लीट हो गए थे, भर गए थे इजीली. अच्छा. तो ओके. ओके. मतलब उतना कंटेंट आपके पास है कि आप इसमें आंसर अच्छे से लिख सकते हो. राइट. और एक और चीज मुझे लगी, इस बार कोई बहुत ज्यादा मतलब सीमिंगली डिफिकल्ट ऊपर से क्वेश्चन शायद नहीं दिया है. ना, इससे नहीं. पहले 1B में कभी कभी बहुत टफ क्वेश्चन पूछे हैं कुछ कुछ, यस, हाँ. है ना. एंड आई थिंक वन भी आउट ऑफ ऑल में द थ्री, ज्यादा ट्रिकी. मेरे को लग रहा है यही एक सेक्शन है जिसमें आप थोड़ी सी पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज ज्यादा दिखा सकते हो अपनी. यस, बिकॉज लेट्स से वन रीड अबाउट कास्ट पॉलिटिक्स इज आल्सो, लेट्स से इसमें आप यू यस, हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स हाँ, टू राइट थ्योरी, अबाउट. हाँ, सेम हमारे पास थ्योरी इंडियन है. पार्टी सिस्टम, इसमें भी अगर किसी ने अच्छे से एनालिसिस यस, कर हाँ, रखी है वो द हाँ, पार्टीज यू कैन वो राइट. पूरा. सुप्रीम कोर्ट वाला, बाकी थोड़े से GS2 डोमिनेट ज्यादा लग रहे हैं. जैसे हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज का सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले में इट इज वेरी हम्म, डिफिकल्ट टू लेट्स से डिफरेंशिएट आवर आंसर. हाँ, Okay, एग्जैक्टली. so I think on the choice point, I think it's a very fair choice because I think these are your strong हम्म, topics as well, and that can also या, provide a competitive edge. Okay, excellent, हम्म, excellent, excellent. चलो फिर करते हैं, अब हम बात करते हैं पेपर टू की. Okay, I think हम्म, these are the compulsory questions which come in paper two. या. Before I start that, any question which you missed, let's say in paper one, या पूरा का पूरा attempt करके आए हो? एनवायरमेंटलिज्म ऑफ द पुअर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी पड़ गई थी इसमें, टाइम की जो कमी, हाँ वो लोग एक ठीक है, 10 बट मार्क का स्टिल क्वेश्चन. हाँ, ऑलमोस्ट 240 मार्क्स इज अ वेरी गुड हाँ, अटेम्प्ट आई हैव इन अटेम्प्टेड एनी केस. 240 मार्क्स या, ऑफ दिस. क्योंकि यस. वो एकदम से शायद, एक तो चलो टाइम का भी इशू है, पर शायद कुछ लोग को हाँ, उसमें कंटेंट का भी हल्का सा इशू आ सकता है. हाँ, हाँ, मे बी, या, बट आई या, थिंक वी डू कवर इट इन अवर लेट्स से बेसिक लेक्चर जो हमने करे थे, उन सब में तो हमने पढ़ा था थोड़ा सा उसके बारे में. हाँ. मतलब ओके. इट इज अ क्वेश्चन जो आप आंसर कर सकते हो डेफिनेटली, राइट. बट थोड़ा सा मेरे पास मेनली टाइम की कमी थी, बिकॉज थोड़ा बहुत श्योर, हम आई गेट सोशल इट. मूवमेंट्स और एनवायरमेंटल एग्जांपल्स या कुछ तो कोट कर ही सकते हैं रिसेंट अपने. राइट. तो राइट. ओके. दैट वाज वन थिंग. राइट. ओके. 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 ग्रेट. बात करते हैं पेपर टू ए की. पेपर या, टू ए से पहले लेट्स से हाउ डिड यू फील वाज पेपर टू दिस ईयर? पेपर टू भी आई डोंट थिंक कि इतना टफ आया था हम्म. कंपैरेटिवली. इस साल दोनों पेपर राइट. ऐसे नहीं आए कि ये मतलब बहुत ज्यादा बाउंसर्स पूछ लिए, क्योंकि पेपर टू में जनरली ज्यादा टेंडेंसी. राइट. बट और आई थिंक पैटर्न थोड़ा बहुत तो चेंज हो ही गया है कि इवन पेपर टू में दे आर आस्किंग मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, करंट इवेंट्स. राइट. तो राइट. आपको थ्योरी, इसमें थ्योरी यूज करने की उतना मौका नहीं मिलेगा जनरली. राइट. लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं उतने ज्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं पिछले 3-4 सालों से. तो इट्स लाइक या. दिस काइंड ऑफ पेपर इज एक्सपेक्टेड कि हाँ, ये ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे. राइट. राइट. तो एक वो करेक्ट. एस्पेक्ट है. हाँ. हम्म. अब इसमें भी जैसे लेट्स से व्हेन आई सी द 10 मार्कर्स, ओके, तो मेरे हम्म. को जैसे थोड़ा सा लगा, जैसे एक है ना, व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, ऑन अ पॉलिटिकल लाइटर थियोरी. नोट हाँ. द स्टूडेंट्स आल्सो फील लेट्स से डिफिकल्टी स्पेशली इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. यस. तो स्पेशली कि कैसे करना है लिखना है, तो उसको लेट्स से हम्म. दैट इज एन इशू.
देन फॉर एग्जांपल ये तो चलो हो जाता है एम्पिरिकल थ्योरीज एंड ऑल द एवोल्यूशन ऑफ हाउ दिस डिसिप्लिन हैज इवॉल्व्ड, ये तो हम हाँ पढ़ते हैं इसके बारे में. ओके. या Third question was slightly, let's say, how did you think about this one? How does democratic हाँ politics construct citizenship? आई थिंक आई डिड फाइंड डिफिकल्टी इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन हम्म. कि थोड़ा सा मुश्किल, मतलब हाँ. मतलब इसमें पॉइंट्स या किस थ्योरी को यूज करना है या कौन सा नॉलेज अपना यूज करना है, इसमें वही डिफिकल्ट हो रहा था कि हाउ हाउ डू यू स्ट्रक्चर योर या आंसर कहाँ से कि स्टार्ट करना है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर करना है, पॉलिटिक्स या कंस्ट्रक्ट दिस कुड सिटीजनशिप. हैव बीन करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. दिस वाज अ बिट ऑन द डिफिकल्ट साइड. या एंड अगेन जो 4 और 5 में भी ना ये वाले क्वेश्चंस भी हाँ स्ट्रक्चर फंक्शन दूर से किसी को लग सकता है, बट इन राइटिंग दिस हाँ डाउन इन 10 मार्क्स, क्योंकि राइटिंग. दीज आर स्लाइटली फैक्चुअल, यस. है ना, हाँ कि आप किस उतना तरह से हमको लिखोगे याद वहां नहीं पे. रहता है. हाँ, और और आईसीजे आई थिंक मेड अपीयरेंस फ्यू इयर्स बैक, लास्ट बट ईयर ऑल्सो दे स्टिल आस्क्ड आईसीजे. आईसीजे, या करेक्ट, करेक्ट, हाँ करेक्ट. और मतलब कई बार वो भी टेंडेंसी होती है कि लास्ट ईयर तो पूछ ही लिया आईसीजे, अब थोड़ी हाँ. पूछेंगे. ये तो होता है, और करेक्ट, उनने फिर करेक्ट, पूछ करेक्ट. लिया. बट बिल्कुल, बिल्कुल. यूएनएससी तो आप फिर भी इतना पढ़ते हो इवन फॉर योर इंडियन मतलब इंडियाज रोल इन यूएनएससी, उस सब राइट. के लिए हाँ. आप फिर भी पढ़ लेते हो कि हाँ सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है. आईसीजे करेक्ट, में उतना ज्यादा डिटेल में तो आप नहीं पढ़ोगे नहीं. तो आई करेक्ट, थिंक करेक्ट. दिस दिस इज अ इज फेयर वन पॉइंट, की या बिल्कुल. तो 20 मार्क्स का इनने सीधे सीधे इंटरनेशनल बॉडी से ही पूछ लिया है. नॉट इवन इंटरनेशनल, हाँ. यूएन बॉडी से ही इनने 20 मार्क्स का पूछ लिया. राइट, तो राइट, ये राइट. थोड़ा वो इसमें थोड़ा सा हो सकता ये है भी कि थोड़ा सा थोड़ा ट्रिकी हो डिफिकल्ट सकता हो. है. या हाँ, 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 स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लेट्स से हाउ दे अवार्ड मार्क्स, तो हाँ वहां पे थोड़ा सा हो सकता है कि वो किस तरह से करेंगे इसमें. चलो, दैट वी विल गेट टू नो श्योरली, है ना. यस. इसके एंड देन सेकंड पॉइंट वुड बी कि कौन सा अटेम्प्ट करा किस सेक्शन से, पेपर टू हाँ ए में ज्यादा करा या पेपर टू बी में. मैंने पेपर 2A के ही क्वेश्चंस किए थे चलो, दो. आई थिंक यू हैव मेंटेन योर ट्रेंड, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उससे ही ज्यादा करना है. हाँ अच्छा. यस. एंड व्हाट वर योर क्वेश्चंस? आई डोंट थिंक आई हैव द स्लाइड्स फॉर दैट, बट स्टिल वी कैन हैव आवर डिस्कशन अराउंड इट. हाँ हाँ, लेट मी जस्ट हैव दिस अगेन प्रॉपरली. हाँ, आई थिंक 1 सेकेंड. हाँ, अभी स्लाइड्स हट गई होंगी, आई थिंक यू आर एबल टू सी हाँ मी. हाँ या हाँ, ठीक है, ठीक है, बिकॉज अभी फॉर ऑल ऑफ दैट आई वाज नॉट एबल टू, लेट्स से, क्विकली डू दैट. ओके, नो इश्यूज. हम्म. तो which two questions were you able to attempt, if you have the paper etc, या कुछ अगर याद हो. I think I attempted the second question and the ओके. नाम, हाँ. हाँ नाम वाला क्वेश्चन किया था मैंने. राइट. एंड एक क्वेश्चन जिसमें क्वाड था, आई थिंक क्वाड वाला वो उसी क्वेश्चन का पार्ट था. अच्छा, ओके. नो, उसमें देखो, थोड़ी सी देयर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन नाम, देयर इज अ क्वेश्चन उसी में ही एक फंक्शनलिस्ट अप्रोच पूछा है, और उसमें हाँ म्यांमार का पूछा है ना. दैट इज हाँ क्वेश्चन नंबर दैट 2. क्वेश्चन. हाँ हाँ राइट. क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन दे हैव आस्क्ड यू यूरोपियन यूनियन पूछा है, रैपिड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. वाज दिस द वन यू अटेम्प्टेड नहीं नहीं और द नहीं नहीं नेक्स्ट वन? द नेक्स्ट वन. हाँ, क्योंकि अच्छा, नेक्स्ट वन इज एक्चुअली प्रीटी इंटरेस्टिंग बिकॉज दे आस्क्ड द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज. या या ये तो एकदम ब्रेड एंड बटर है भाई, इसमें तो सब हाँ स्कॉलर से लेकर पूरा स्ट्रक्चर सब तैयार है ना. वही वो एक सेकंड आल्सो ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म, दैट आल्सो रियलिज्म दैट इज आल्सो is a question that we would, let's say, हाँ put our fairly bets easy on. question. Yes. Yeah, and then the constraints on American hegemony today, this is a very good question, in fact. हाँ यस I would मतलब even have been more impressed अगर वो ये 20 मार्क में पूछते. उसमें इसमें बहुत कुछ है हाँ लिखने के लिए आपके पास. इसमें या बहुत कुछ लिखने के लिए, बट ये एक क्वेश्चन था जिसमें आप तीनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से इसमें आप आंसर कर सकते हो. this is true, this is true. Yeah, question number 4 is यस. one, right? Huh. क्वेश्चन नंबर So at 4 least इज if you could, let's say, give us some pointers, or especially on the various constraints on American hegemony. तो let's say कुछ कुछ points अगर आपने जो लिखे हो. वन. आई थिंक हेजिमनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक तो पोलैरिटी ऑफ पावर जो थीसिस है उसमें Right, जो थ्योरी है कि हेजमन विल ओवरस्टेच इटसेल्फ एंड मैग्नानिमिटी जो आता है उससे हम right, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसको. एंड देन right, वी कैन स्टार्ट कि अमेरिकन हेजमनी को कौन कौन से, एक मेजर थ्रेट है राइज ऑफ चाइना, दैट इज right, द प्राइमरी थ्रेट दैट, और उसमें भी आप मीर शाइमर को इंट्रोड्यूस करा सकते हो बिकॉज मीर right, शाइमर वाज द right, वन हु सेड दिस. right. Correct, अदर correct. कंस्ट्रेंट वुड बी द इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, Right, द वॉर एंड टेरर, और उसका इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज दे वेंट बैक फ्रॉम अफगानिस्तान और तालिबान का रूल एस्टेब्लिश हो गया, तो वो एक फैक्टर आप घुसा सकते हो उसमें. एंड देन right, द थर्ड कंस्ट्रेंट वुड बी द रिवाइटलाइजेशन ऑफ रशिया और द hmm, राइज ऑफ रशिया, जो अभी हमको वो देखने को मिल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट right. ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर.
तो मैंने ये 3 करेक्ट। पॉइंट्स पे मेजर फोकस किया था कि दीज आर द मेजर कंस्ट्रेंट्स दैट आर बीइंग फेस्ड बाय यूएसए अपार्ट फ्रॉम यूएसए इटसेल्फ। जो उसमें भी आप यूज हम्म कर सकते हो कि द लाइक फ्री राइडर वाला जो एग्जांपल है एंड हम्म हेजमैन ओवरस्टेचिंग इटसेल्फ उसमें हेजमेंट, या ट्रम्प्स करेक्ट। ट्रम्प्स प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, यूएसए लीविंग डब्ल्यूएचओ, राइट यूनेस्को, ये सब राइट। एंड रिट्रीटिंग। तो हम्म दैट इज आल्सो एन एस्पेक्ट कि अमेरिका इटसेल्फ डज नॉट वांट टू बी अ हेजेमन पावर। जो इवन इन हेजेमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी आप जो बोलते हो कि हम्म कैपेबिलिटी एंड द विल टू बिकम अ हेजेमन, राइट। दैट हम्म विल इज स्टार्टिंग टू गो डाउन, अगर आप राइट। वैसे उसको इन अ बोलते हो। कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, हाँ, या इन अ बिल्कुल, श्योर कंपैरेटिव श्योर, बिल्कुल। पर्सपेक्टिव आप वो यूज कर सकते हो। एंड एक पार्ट क्वेश्चन का वही था कि विच विल बी द मोस्ट प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट वन, या करेक्ट। प्रोमिनेंट वाला। तो आई रोट अबाउट चाइना, मतलब बारिंग अदर हम्म। factors, China seems to be the most prominent threat Correct. that we'll face Correct. In in the fact, future. we also use terms like New Cold War and Cold न्यू War कोल्ड वॉर 2.0. या हाँ, Yeah, तो and वो how हम the vision उसमें of यूज कर Pax सकते Seneca is at odds with हैं। American हाँ, इट hegemony, वांट्स टू पैक all these सिनेका। things. हाँ, यस। correct, correct. पर हाँ, this is actually a very good question. Wherein अगर बाकी बच्चों से भी अगर if you've read this well, there is, अब आप हम्म। इसमें use your theories, use your examples, use the other dimensions, and you can या। definitely score good marks in this one. Okay, so this is one. यस। Okay. Coming to paper section 2B, कुछ लोग का ये भी strong होगा. Many of you might have हाँ। attempted यस more यस। parts from here. फ्रॉम Okay. टू बी। So here, how did you feel the section B? कैसा आई लगा, थिंक मतलब उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा मुश्किल लगा हो? And to my सेक्शन viewers, बी I'm के really लिए। sorry for this part. I do not have a PPT. Otherwise, we are just doing to follow along. Please have the copy of paper with you as well. I already have one. But if let's say not able to follow, एक बार paper साथ में follow करेंगे तो it will be a good experience. Yeah, please, Animesh. हाँ, आई थिंक इसमें भी 10 मार्क का क्वेश्चंस, आई थिंक डब्ल्यूटीओ वाले क्वेश्चन के अलावा Right, दे वर डूएबल। right. जस्ट हाँ, WTO में they अगर actually, yeah, right, right. थोड़ा सा थोड़ा they सा वो went into a डिफिकल्ट था, slightly more technical. हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं. Correct, correct, correct. तो वो शायद टेक्निकल एंड some हम्म ये भी था कि दिस वाज नॉट रीसेंट न्यूज़। हाँ हाँ कोविड हाँ वाला जो वेवर था दैट ऑल हैपेंड इन 2021 और 22 आई गेस। हाँ हाँ, थोड़ा सा पहला है क्या? राइट हाँ, राइट थोड़ा राइट। सा पहले था ये। तो हम्म। इसमें थोड़ा सा उसके लिए रिकॉल करने में एंड भी थोड़ा अगेन सा। इन्होंने थोड़ा सा उसको टेक्निकली कर दिया था, उसने एग्जैक्टली ट्रिप्स हाँ पे पूछा है उन्होंने कि वो ऐसा हाँ, क्यों उन्होंने नहीं है एग्जैक्टली ट्रिप्स पे है ना? पूछा। यस। या तो करेक्ट 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 करेक्ट। दैट इज। ओके, अदर देन दैट आई थिंक लैक ऑफ रीजननेस इन साउथ एशिया इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स. हाँ। यस। सार्क और साफ्टा, वो पूरी बात जो हम करते हैं, हाँ। दैट आल्सो रिमेन्स. एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंसर्जेंसीज इज आल्सो डायरेक्टली मेंशन्ड इन आवर सिलेबस. वो भी रहता एंड आई थिंक है ना? ये दोनों क्वेश्चन काफी सिमिलर भी हैं, मतलब हाँ थोड़ा बहुत हाँ, करेक्ट इसमें करेक्ट थोड़े करेक्ट. बहुत वी पॉइंट्स आप बोरो ओवरलैप कर रहे हैं। इंटरचेंजेबली. वी करेक्ट बोरो, करेक्ट करेक्ट बोरो करेक्ट. भी पॉइंट्स। Now, question जो 1E, sorry, 5E है, this was the one has been repeated also, and then because of G20's India's presidency, global south पे बहुत ज्यादा एक तरह से डिस्कशन हाँ। हो रहा यस था. यस। हम्म. आई थिंक तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि दिस वाज एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बिकॉज हाँ हाँ 2023 एंड द कमिंग इयर्स आर सेट टू बी द इयर्स ऑफ ग्लोबल साउथ, क्योंकि G20 की या करेक्ट प्रेसिडेंसी भी अगले 3 साल तक आई थिंक राइट लीडर्स ऑफ द साउथ कंट्रीज की ही है, साउथ हम्म अफ्रीका एंड ऑल। तो ये राइट ग्लोबल साउथ पे काफी फोकस किया जा रहा था पिछले एक आध साल से। राइट. आई थिंक दिस इज अ And again, क्वेश्चन if we can recall 2018 and 19 में they had asked about ITER also, global south के context में हाँ। बहुत specific पूछा था. वो तो और यस मुश्किल कर दिया था. यस। ये फिर भी सॉरी, उन्होंने ITEC, state ITEC, या पूरा जो, आईटीईसी जो या इंडिया का प्रोग्राम है। यस। हाँ हाँ हाँ, राइट तो राइट. एंड आई थिंक ओके, करेक्ट. बाकी पीस कीपिंग ऑपरेशंस इज आल्सो, लेट्स से एक बार ऑलरेडी पूछ चुके हैं. आई थिंक आपने याद करा ना हाँ क्वेश्चन नंबर हाँ, 6. मैंने ये वाला क्वेश्चन किया। यस, सिक्स क्वेश्चन किया। ओके, सो इंडिया रशिया, अगेन हाँ। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड पीस कीपिंग फोर्स, इस पे भी या। many of times we have discussed about this, and I think quad, which plays a very important role. So सही है, I think these are अच्छा। हाँ। slightly more expected ones, right? यस। अब न्यूक्लियर पॉलिसी में इफ somebody feels confident, वो वैसा अटेम्प्ट कर लेंगे, है हाँ ना? वो। बट अगेन ये पूरी की पूरी चीज, लेट्स से अगेन अगर मैं वेस्ट एशिया क्वाड की बात करूं, हम्म। I2U2 पूरा ग्रुप है या या। एटसेट्रा, राइट? तो वो भी लुक वेस्ट, दीज आर ब्रॉडली स्पीकिंग. तो पेपर 2B भी, आई डोंट थिंक दे आस्क्ड यू दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन दिस ना ईयर, ना, आई व्हिच थिंक आल्सो मींस कंपटीशन पॉल साइंस पे इतना ज्यादा है, तो दिस अगेन वुड मीन कि अच्छे से जो लिखेगा उसको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे. हाँ,
आई थिंक दिस ईयर जो पेपर आए हैं उसमें व्हाट मैटर्स मोर इज योर फ्लो एंड कंटेंट, स्ट्रक्चरिंग एंड कंटेंट ऑफ योर आंसर, बिकॉज दीज आर प्रीटी राइट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगर आपने ढंग से प्रिपेयर किया है तो राइट यू विल बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। उतने ज्यादा राइट बाउंसर्स नहीं है। 20 राइट मार्कर्स स्पेशली पेपर वन के 20 मार्कर्स में फिर भी थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आप फेस कर सकते हो, बट पेपर टू हम्म में फेयर बिट ऑफ क्वेश्चंस जो थे इजी ही थे, एक आध क्वेश्चन। राइट 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 तो Now, just to sum all these things up, I think one last question which I would want to ask from you, या कि based on this year's, let's say, mains, a lot of the students who would watch this would be perhaps preparing for 2024, 2025. या So, mains से related generally, be it GS or Pol Science, what would your advice be? Let's say how to prepare, how to manage their time, कैसे answer writing करें. So, if you could speak about it, and then let's say we will let's say wrap it up. Yeah. आई थिंक मेंस में इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव नोट्स, शॉर्ट Hmm. नोट्स। एक तो है कि आप जब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ साथ में Hmm. मेंस की भी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत चलती रहनी चाहिए। उस टाइम Right. पे आप नोट्स मेकिंग करिए। Hmm. मतलब जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें यू ऑल्सो रीड द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन मेंस एंड देन ट्राई एंड प्रिपेयर योर नोट्स अकॉर्डिंगली। थोड़ा नोट मेकिंग में भी एक स्किल चाहिए होती है, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ही वो नोट मेकिंग थोड़ी रिफाइन होती है। ये तो शुरुआत में तो हम Correct. पूरी पूरी बुक बुक ही लिख वापस से देते हैं हाँ. रिप्रोड्यूस कर देते हैं, लेकिन Right. थोड़े बहुत नोट्स हमको वैसे बनाना जरूरी है, बिकॉज जो 90 डेज का टाइम है उसमें दैट नोट्स विल हेल्प अलॉट, क्योंकि यू हैव Hmm. 90 डेज, उसमें आपको आंसर राइटिंग भी करनी है और उसमें आपको पूरा सिलेबस भी एंटायर सिलेबस कंप्लीट करना है। सो इन दैट सेंस आपको नोट्स मेकिंग चाहिए होता है, एंड स्पेशली फॉर द लास्ट 15 डेज ऑफ रिवीजन दे आर अ लाइफ Right. सेवर। और हर टॉपिक पे अगर आपके पास दो तीन पेजेस बने हुए हैं तो वैसे आप करिए। एंड you have to have answer writing practice, because uh, अभी you have to for mains you have to develop your thinking capacity। क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके पास 10 मार्कर के लिए 7 मिनट्स हैं और 10 Hmm. 15 मार्कर्स के लिए 10 मिनट्स, उससे Right. ज्यादा नहीं। उसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, एंड देन आंसर भी करना है। तो Hmm. उसमें यू हैव टू बी क्विक इन योर क्विक इन थिंकिंग अप मोर एंड मोर पॉइंट्स। एक Right. जेनेरिक सेट ऑफ पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल होता है हर टॉपिक के लिए। you Hmm. can prepare a basic generic set like for my view। अगर मैं अपने इस साल के एक्सपीरियंस की बात करूं, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, तो Hmm. व्हाट आई डिड वाज मैं एक जनरल आइडिया लेके चलता था कि जीएस वन में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आई कैन फ्रेम माय आंसर्स थ्रू दीज पॉइंट्स। Right. और Right. अगर कुछ स्पेसिफिक पूछा जाएगा तो मैं उसमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस स्पेसिफिसिटी लाने की कोशिश करूंगा, बट एक Right. जनरल आइडिया आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप Hmm. फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक आप जा सकते हो। तो एक Correct. ये पॉइंट है कि आप मेंस में करो, और दोज 90 डेज में आंसर राइटिंग इज की। उससे पहले आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने से उतना पॉइंट मेरे को नहीं लगता है। फर्स्ट यू Hmm. हैव अ डिसेंट सेट ऑफ नोट्स एंड वो प्रिपेयर कर लो, उसके बाद उन 90 डेज में पूरा आप आंसर कर सकते हो। एंड फॉर पी एस आई आर आई थिंक पी एस आई आर वो ईयर लॉन्ग आपको पढ़ना ही पड़ेगा। प्रीलिम्स के Hmm. एक दो महीने पहले से आप उसको स्किप कर सकते हो, बट उसके अलावा पी एस आई आर अच्छे से हमारे जो नोट्स हैं उसमें वो पढ़ो। एंड पी एस आई आर में भी स्ट्रक्चर एंड फ्लो, जो आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन यू शुड हैव गुड इंट्रोडक्शंस। थोड़े बहुत जो है आपके पास एक रेडीमेड इंट्रोडक्शन होने चाहिए, बिकॉज एक बार आप इंट्रोड्यूस कर देते हो आंसर को तो देन इट गेट्स इजियर टू राइट द आंसर्स। एंड Right. स्टैटिक पार्ट जो है आपका पेपर वन ए का एंड पेपर टू ए का, वो बहुत अच्छे से आपका solidly prepared होना चाहिए, because you can use these static questions, static theories in your contemporary questions also। पेपर वन बी में भी Hmm. आप थोड़ी बहुत थ्योरी यूज कर सकते हो पेपर वन ए की, या पेपर टू में भी जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं जो कंटेम्प्रेरी उसमें पूछे हैं, तो यू कैन जस्टिफाई योर आंसर्स थ्रू दोस थ्योरी। तो अगर आपका Hmm. थ्योरी पार्ट सॉलिड है तो आई थिंक यू कैन आंसर सम ऑफ द बाउंसर क्वेश्चंस आल्सो उस वे में। तो एक वो है, एंड देन be ready for any bouncer in the question। like UPSC is known to be unpredictable, तो it आपको मतलब वहां पे कोई भी क्वेश्चन आए यू हैव टू बी रेडी फॉर एनीथिंग।
तो Correct. Yeah. वो रहता है कि स्पेशली इन एसेज, लाइक जब Hmm. फर्स्ट टाइम फिलोसॉफिकल एसेज दोनों पेपर में इंट्रोड्यूस हुए थे, Hmm. a lot of people would have panicked कि क्योंकि इतना Surely. आसान Yeah. नहीं होता, बट अगर इफ यू आर रेडी फॉर इट कि हाँ ठीक है, ये इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन. मेंस इज द Hmm. relative पेपर, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि Correct. मेंस Yeah. इज द relative पेपर, तो इट विल बी, अगर आपके लिए डिफिकल्ट है तो मोर और लेस इट विल बी डिफिकल्ट फॉर 98% और 99% ऑफ द अदर एस्पिरेंट्स. So write the best you can and try and complete your papers. अगर आप complete कर लेते हो papers, that in itself is a very big achievement Absolutely in my true. Yeah. opinion. Correct. So that's my 2 cents on this. Excellent. Thank you so much, Animesh. And I know many of you would be wanting to know, let's say, how Animesh cracked EPFO with his Yeah, strategy, or let's say 66 BPSC, or again his knack of again and again clearing prelims multiple times and scoring very high marks. So for that, I think we can have sessions at a later and appropriate date when you have time. तो हम वो schedule कर sure. लेंगे. And I'm very happy for you to be very freewheeling. आपने बहुत अच्छे से, let's say, all these things जो भी लिखा एग्जाम में, very honestly you have shared with, let's say, for the better benefit of all the students. So very thankful for Yeah, that, and also very thankful for thank sharing you. your precious time. तो बहुत अच्छा लगा in this time का पता भी नहीं चला. I think I was, अभी हम इतनी yeah. देर से बोल रहे हैं, your let's say throat, you would also want to हाँ have a sip of water. मेरे को भी हो रहा है. Yes, Okay, so thank you so much, and thank you thank you, to thank you. all the people also who are, let's say, watching this. Thank you for tuning into us. We'll meet now shortly in another session, and we'll discuss any other relevant topic which you want to request to us. Okay, so thank you, Animesh, and thank you, Thank you, everybody. We'll meet thank very you for soon. having me. Thank you.